Hello everyone and welcome to Shifting Gears. With me today I have the Skoda Slavia mid-sized sedan. Now product positioning is very important. This is a proper C segment sedan. In today's date, ये जो Skoda Slavia है, it is going to be an ideal rival to the new generation Honda City, the 5th generation model. But because of the sedan proportions and the overall silhouette and the segment that it is positioned in, this car will also of course rival the 4th generation Honda City, which is also on sale, then the Hyundai Verna and also the Maruti Suzuki Ciaz. Now also because of the price range and the product positioning, ये जो Skoda Slavia है, it will also rival compact SUVs and other mid-sized SUVs here in the Indian market. Now dimension wise, this Skoda Slavia is a nice big car. It is claiming some segment best numbers. So first let us talk about the dimensions of this Skoda Slavia sedan. Now the overall length of this Skoda Slavia is 4541 millimeters. The wheelbase is 2651 millimeters. इस गाड़ी के साथ आपको जो विड्थ मिल रही है with mirrors, that is 1958 millimeters. The overall height is 1507 millimeters. If you want to know about the boot space, that is 521 liters when the seats are in place. Then the cabin width at the front is 1446 millimeters and at the back the width is 1427 millimeters. इस गाड़ी के साथ आपको जेनरस 179 मिलीमीटर्स का ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, because of which this Slavia sedan is not going to be shy when you drive it over bad roads and when you just drive anywhere across the country in this sedan. This is the first time that I am seeing the Skoda Slavia in flesh और मुझे ये गाड़ी दिखने में काफ़ी पसंद आई. It looks very premium, the proportions are right and typical of Skoda designs. You have sharp cuts and crease lines. The car is very edgy to look at and still it is very timeless. ये design जो है, it will age well. You know that the Rapid has been on sale for almost a decade here in the Indian market and that car still looks good. And I think this Skoda Slavia in 2030 maybe will still remain one of the best looking cars in the segment. Now let's talk about the features of this all new Skoda Slavia which is available on sale. इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सटीरियर डिज़ाइन के बारे में बात करने वाले हैं. इंटीरियर्स के लिए हमने एक अलग वीडियो अपलोड किया है एंड वी हैव टू सेपरेट ड्राइव रिव्यू वीडियोज़ where first we are driving the 1 liter variant and then we are also driving the 1.5 liter variant of this Skoda Slavia. That 1.5 liter engine, by the way, is pumping the same power figure which was seen on the first generation Octavia RS here in the Indian market. So this new Skoda Slavia is definitely punching above its weight. It is offering you performance numbers which should quench your thirst for need for speed. सामने से जब आप इस गाड़ी को देख लेते हो, you will notice you have that typical hexagonal grille, you have that chrome accent, you can call it the butterfly shaped grille if you feel like. The chrome is not overdone, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी प्रीमियम दिखाई देता है. और ये जो ग्रिल सेक्शन है, यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए हैं which are vertically stacked. There is a lot of space in between these slats, so there is going to be a lot of air allowed inside the engine bay area for your engine components to stay cool when you are going out on a long drive. But this is a little too much, I think, because some stones and pebbles can be kicked up and that can hurt your engine components. But overall the grille is very good looking. Skoda की ये नई brand identity, the new logo sits very proudly on the bonnet. It shows off quite well when you look at the car even from a distance. And then just look at the bumper of this vehicle. Very sporty, very edgy, काफ़ी prominent cuts और crease lines यहाँ पे दिए गए हैं. Lower down you will notice that it is nice and flat और यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा lip नहीं है which will scrape on those large speed breakers. Lower down on the bumper आपको ये बड़ा air dam section मिल जाता है. Finished in plastic. नीचे कोई भी chrome accents आपको नहीं दिए गए हैं. There is not an overdose of chrome at the front end. Then you will notice ये जो fog lamp area है,
यहाँ पे आपको एक ब्लैक हाउसिंग मिल जाती है, दिस इज़ अ प्लास्टिक हाउसिंग। यहाँ पे आपको एक क्रोम एक्सेंट मिल जाता है, दिस एनहेंसेस द ओवरऑल विड्थ ऑफ द कार। अगेन जस्ट लुक एट हाउ द बम्पर हैज़ बीन डिजाइंड, कट्स और क्रीज लाइन्स आपको यहाँ पे किस तरह से मिल रहे हैं आप देख लीजिए। बिकॉज ऑफ दिस Skoda Slavia looks very dynamic, standard bulb fog lamp setup. And then when you look at the headlamp unit of this Slavia, you will notice you have LED DRLs, you have a projector headlamp, this is an LED unit. आपको यहाँ पे स्मोक डिफेक्ट मिल जाता है विद इन द हेडलैम्प क्लस्टर, एंड द हेडलैम्प यूनिट इज नाइस एंड स्लीक. सो जस्ट लुक एट इट, इट sits well with the overall design. It wraps very nicely with this front fender. ज़्यादा बड़ा नहीं है, it just looks right. After that, on the bonnet you will notice again you have these very sharp creases, gives this Skoda Slavia a nice and premium touch. और जब आप इतने पैसे खर्चे करने वाले हो इस गाड़ी को खरीदने के लिए, when you look at it, it is going to justify the price tag even when the car is stationary, because it is a good looking car in my opinion. But if you think this car is good looking or not, you have to let us know in the comments below. That's pretty much it when you talk about the front end design of this Skoda Slavia. Very bold and very stylish. Compared to competition, मेरे हिसाब से ये गाड़ी ज़रूर एक खूबसूरत ऑप्शन है if you are looking to buy a sedan in today's date. Then when you move to the side profile, सबसे पहले just look at the crease lines. This cut over here, it starts from the headlamp on this front fender, and this crease is followed till the end. So it wraps around over here on this kink for the DLO section. और यहाँ से जो crease line start होती है, this crease line is continued till this Skoda applique on the front fender. यहाँ पे आप देख लीजिए आपको ये chrome accents मिल रहे हैं. You have the Skoda branding on a gloss black applique. एंड देर इज़ नो टर्न इंडिकेटर ओवर हियर ऑन द फ्रंट फेंडर. टर्न इंडिकेटर जो है आपको मिरर पे मिल रहा है. इस गाड़ी के साथ बाय द वे आपको कोई भी 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड नीदर आर यू गेटिंग एनी ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस विद दिस मिरर. यहाँ पे आपको पडल लैंप वाला फीचर भी नहीं दिया गया है. सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. आफ्टर दैट लुक एट द क्रीज लाइन्स लोअर डाउन ऑन द डोर ट्रिम. वेरी गुड लुकिंग दिस कार इज, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी स्टाइलिश. डोर ट्रिम्स पे आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं. वेरी नाइसली डन. यू गेट अ क्रोम रिक्वेस्ट सेंसर एज वेल. आई लाइक इट दैट दिस रिक्वेस्ट सेंसर बटन इज़ नॉट अ प्लास्टिक ब्लैक पीस. DLO सेक्शन जो है विंडो सिल एरिया का, यहाँ पे भी आपको क्रोम एक्सेंट्स दिए गए हैं. द बी पिलर इज़ ब्लैक्ड आउट. यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल रही है. The A pillar and the C pillar is not blacked out. यहाँ पे आपको कोई भी floating roof effect नहीं मिल रहा है. And as of now you don't even get dual tone paint options with this Skoda Slavia. Then look at the alloy wheels. इस गाड़ी के साथ आपको multi spoke 16-inch alloy wheels मिल रहे हैं. You do get a dual tone effect, and these are Goodyear tires, and you are going to get 205 55 R16 कॉन्टैक्ट पैच विद दिस Skoda Slavia. फ्रंट एंड पे आपको डिस्क ब्रेक ज़रूर मिल रहा है, ऑफ कोर्स दैट इज़ स्टैंडर्ड किट. लेकिन जब आप इस गाड़ी के पिछले टायर को देख लोगे, यू विल नोटिस दैट यू आर नॉट गेटिंग ऑल 4 डिस्क्स. यहाँ पे आपको एक ड्रम ब्रेक सेटअप दिया गया है. ओवरऑल द साइड प्रोफाइल इज़ वेरी गुड. द डायमेंशंस आर सिमिलर टू द Gen 1 Skoda Octavia which was on sale quite a long time back, and this Slavia with the new pricing, with the premium pricing, is trying to justify that with the overall size, and I think the size is just right. But for that you also have to check out our interior review video where you get to know if the inside of this Skoda Slavia is reasonable and practical. Up top on the roof आप देख लो, इस गाड़ी के साथ आपको एक शार्क फिन एंटेना दिया गया है. द एंटेना इज इन अ कॉन्ट्रास्ट शेड. यहाँ पे ये एंटेना जो है इट इज फिनिश्ड इन ब्लैक. रूफ पे आप देख लीजिए आपको एक सनरूफ भी दिया गया है. बाय स्टैंडर्ड सनरूफ स्टैंडर्ड्स इस सनरूफ की साइज नोटिसेबल है, नोटवर्दी है, बड़ी है, but it is still not a panoramic sunroof that you are getting with this Skoda Slavia. But I think in the sedan segment, the Verna and the Honda City have similarly sized and spec'd roofs.
none of the cars in this segment are offering you a panoramic roof. Then when you move to the rear end design, I really like this part the most. A very beautiful looking car. आपको Skoda की block lettering नजर आएगी on the tailgate. Slavia की branding आपको tailgate पे नजर आएगी. Not too much of chrome on the tailgate section. Reverse camera जो है वो यहाँ पे tuck in किया गया है. Very prominent crease lines on the tailgate as well. आपको यहाँ पे कोई इंटीग्रेटेड स्पॉइलर इफेक्ट नहीं मिल रहा है ऑन द टेलगेट. मे बी यू विल गेट दैट एज एन एक्सेसरी विच यू कैन जस्ट स्टिक ऑन दिस टेलगेट. नीचे बम्पर पे आप देख लीजिए आपको क्रोम एक्सेंट्स मिल रहे हैं. यू हैव अ जेनरस हॉरिजॉन्टल क्रोम स्ट्रिप विच एनहेंसेस द ओवरऑल विड्थ ऑफ द कार. क्रोम स्ट्रिप के नीचे आपको एक ब्लैक एप्लीक मिल जाता है. You get red reflectors for added safety. This black applique also adds a nice sporty touch to the bumper. पीछे के बम्पर पे आपको पार्किंग सेंसर्स भी नजर आएंगे. एंड जस्ट लुक एट द ओवरऑल हाइट ऑफ दिस बम्पर. बम्पर जो है ये भी ज़्यादा लो नहीं है. सो इवन दो दिस इज अ सेडान, योर अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल्स आर क्वाइट रीजनेबल. तो खराब से खराब रास्तों पे से आप इस सेडान को काफ़ी कॉन्फिडेंटली चला पाओगे विदाउट द फ्रंट बम्पर और द रियर बम्पर स्क्रीपिंग एंड देन इट हर्टिंग योर वॉलेट एंड ऑल्सो हर्टिंग योर हार्ट. जब आप ये सेक्शन देख ही रहे हो, जस्ट लुक एट द ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस एंड ऑल्सो यू विल नोटिस दैट द टेल पाइप डजंट गेट एनी क्रोम एग्जॉस्ट टिप. इट इज़ अ स्टैंडर्ड सेटअप एंड इट इज़ मोस्टली हिडन. आप जब तक झुकोगे नहीं आपको ये टेल पाइप जो है नज़र नहीं आने वाला है. देन व्हेन यू लुक एट द टेल लैम्प, टिपिकल सी शेप्ड टेल लैम्प डिज़ाइन. Skoda's crystalline effect on the tail lamp cluster, very beautiful to look at, very nice and detailed, and I think this looks very beautiful. And in this segment, this tail lamp unit is probably the best looking. So when you compare it to the Verna, to the Honda City and to the Maruti Suzuki Ciaz, I think the Skoda Slavia has the best looking rear in the segment. But do you like it? Do you not? Let us know in the comments below. So what we have with us today is the Skoda Slavia 1.5 liter DSG style variant. ये इस गाड़ी का top of the line variant है and this is what you get on the outside. इससे ज़्यादा कोई stock kit आपको नहीं मिलने वाला है. Of course, Skoda will have a lot of accessories which will allow you to style the car according to your personality. But if you ask me, in stock setup, in this standard format, this Skoda Slavia is the best looking car in the segment and I have no doubts about it. I just purchased the 5th generation Honda City for my father, but if we did not want a diesel powered car, this would have definitely been on the top of the list because it has so much performance on tap and this is offering you all that you need, at least as per sedan segment requirements. तो आपकी क्या राय है इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में? डू लेट मी नो. डू यू लाइक द Skoda Slavia? Is it a good looking car according to you? Will you spend your money and buy this over the competition? Or if you will spend your money and bring home a compact SUV or a mid-sized SUV, because SUVs are the most preferred flavor in the Indian market as of now. If you have any other queries, ask me in the comments below. I will try my best to help you out so that you can make an informed car buying decision. Goodbye. Subscribe to the Shifting Gears channel. Press that bell icon. Always drive safe and always, guys, wear your seat belts.